It's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, pin it on the regal, digging in my pocket, eat a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your chico. I don't talk about it, be about it. Every day I seagull. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog. That's all. Big back and chat, I trap the back for you. I rap a black contract, so rest assured my rights, my wrongs. I ride till I'm right with God. We needed this energy today because we're tackling with a very weird topic. So we gon' be alright. Promises in JavaScript, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. You just stay with me in this one. इसमें मैं यार पढ़ाने नहीं वाला because in the last few lectures बोलने वाला था मैं. In the last few videos, I've been getting way too intense. I've been getting intense with you guys. And that is not what I originally wanted, but the topics were so dense. It was like so theoretical. So this is more of a playground video where I play with promises. You play with set timeouts. You play with asynchronous. बैठे you can think like, oh, event loop में क्या हो रहा है? But you have to play with this shit. So we gon' be alright. We gon' be alright. You hear me? Do you feel me? I think I should part-time rapper, part-time yapper. Part-time yapper. Yapping's my middle name. ठीक है. तो let's just get right into it. Working with promises, not learning about promises. You can learn about it in any 5-6 2-minute video. This is working with promises. ठीक है. Promises takes an executor as an argument which starts executing immediately synchronously. एक फिर भी 2-3 मिनट को overview दे देता हूँ. Promises are meant to wrap your actual asynchronous function. ठीक है, whatever they might be, they are just placeholders. Promises are meant to be placeholders for your actual values. For example, अगर मान लो आपने कोई fetch operation किया, ठीक है, तो आपने fetch equals to something किया, तो you will not get the value until and unless. You will not get the value until and unless the asynchronous operation has been completed, and then you can access it. ठीक है? So let's play with it today. So to declare a promise, we can do something like this. Const promise equals to new promise, which takes a executor function. It's too close to me today. This takes in 2 callbacks. Callback क्या होता है भाई मैं नहीं बता रहा क्योंकि फिर बहुत डेंस हो जाएगी वीडियो. बता सकता हूँ बट बहुत डेंस हो जाएगा सिस्टम. तो callback ले लिया, ठीक है. Now here is your actual asynchronous operation. What syntax error है क्या? So here is where the actual asynchronous operation that you have defined will take place. ठीक है? Actual asynchronous operation will take place. ठीक है? We can mimic it as well. तो mimic करें उसको? करें? कैसे करेंगे? Set timeout से करते हैं ना भाई. Set timeout. You can imagine this to be a API call, a network call, a database call, जहाँ पर actually हमें सर्वर के साथ बातचीत करने में टाइम लग रहा है. इट्स टाइम टेकिंग. मान लो भाई 2 सेकेंड लग गए, क्या आपकी जावास्क्रिप्ट थ्रेड खाली बैठेगी? नो, बिकॉज टाइम एंड जावास्क्रिप्ट थ्रेड्स वेट फॉर नन. दे डोंट वेट फॉर यू ब्रो. लेट्स मिमिक इट. वी कैन डू समथिंग लाइक सेट टाइमर 2 सेकेंड हो गए. उसके बाद console.log we can be like received the data from the backend, and then you can call the resolve callback with, for example, calling the callback. Let's have some condition as well. For example, let's by default set it as true. If condition equals to
इफ नॉट कंडीशन, अगर सिस्टम ठीक नहीं बैठ पाया तो लेट्स कॉल द एरर कॉल बैक कि बिग एल ब्रो, कुछ तो फटा है सीन, ठीक है। सो अगर आपका कंडीशन फेल हो गई तो आपकी रिजेक्ट वाली कॉल बैक हो जाएगी एंड रिजॉल्व में तो होएगा ही होगा। बट हाउ डू वी कंज्यूम द प्रॉमिस? ये तो हमने प्रॉमिस डिक्लेयर कर दिया, बट हाउ डू वी कंज्यूम इट? सो देयर आर टू वेज दैट वी कैन कंज्यूम इट, ठीक है। लेट्स कंज्यूम दिस शिट। प्रॉमिस डॉट देन क्या होता है? इट्स जस्ट एन इंटरनल it's just a mechanism, it's just a design that JavaScript provides, that previously we used to send callback functions which were a way for asynchronous operations to know that after I'm done executing, call this callback. But it led to the pyramid of doom, the callback hell, whatever you want to say. So in ES5 I think the ECMAScript gave us birth, then and catch. So what it does, it's a design where automatically after your asynchronous operation is done completing it, whenever based on whatever result it is, it will either call reject or resolve. As soon as your resolve is called, your control will reach to the then block. So it accepts a message, the callback accepts a message. Just log it for now, message. Ooh. And if it was an error, then we can catch that as well. Error. So let's do it. I like to do it. भाई बिना करे नहीं समझ में आता. So let's just do it. 2. Receive the data from the backend, calling the callback. ठीक है. What if I had some random synchronous code here, for example, you know, a for loop where I'm printing, print that shit. अरे भाई, अरे क्या होगा? क्या होगा? यू सी, पहले वो 10 वाला ही हुआ, उसके बाद ओनली आफ्टर दैट जब आपका ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, फॉर एग्जांपल आपने एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को मिमिक किया, बट डिड योर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम डिड इट वेट for your asynchronous program to complete? No, it did not. That is called the non-blocking nature of JavaScript. And one more thing is that आपने देखा होगा कि ये then वाले blocks भी asynchronous operation खत्म होने के बाद ही execute हुए. For example, after 2 seconds, the API call or whatever asynchronous operation after it was done, we got this, ठीक है? And after that resolve was invoked and we got a console.log of calling the callback. So this is called as resolving the promise. ठीक है? I can chain it as well. I can do some chaining over here. That is to make sure कि it's a staircase design because as you noticed asynchronous operation में the thread is like कि भाई मैं तो किसी के लिए रुकूंगा ही नहीं. I don't wait for anyone. So if you want a series of steps to be executed, वैसे मान लो आपका asynchronous function तो execute हो गया, but after that you want some cleanup activity, you want 3 or 4 things to be always executed after you have resolve the main promise, then you can chain it with then blocks. For example, I am cleaning up. You can further chain it. You can do whatever you want. Done cleaning up. Exiting. Not actually exiting this. We're telling that हमारा जो asynchronous task था और उसके जो follow up operations थे अब हो गए हैं. Thread
is free. What will happen now? एक के बाद एक हुआ. Even though this was supposed to be an asynchronous task, it did not first of all block the thread. जो बाकी synchronous tasks थे वो हुए, and it also was able to maintain the order. Receive the data from backend, call in the callback. I am cleaning up, done cleaning up, exiting. So you see, इस ही staircase pattern में वो चीज़ें execute हुई हैं. Now a common doubt which arises is कि यार ये वाला जो dot then block है, this video is not beginner friendly. ये जो डॉट देन ब्लॉक है, ये तो आपका ये वाला रिजॉल्व को सेटल कर रहा है, या जो भी कर रहा है रिजॉल्व कर रहा है. ये डॉट देन कहाँ से आया? मुझे पता है कि आपने जो प्रोमिस डिफाइन किया था उसके अंदर जो रिजॉल्व था, ओरिजिनल रिजॉल्व कॉल बैक थी, वो एक पैरामीटर लेता है, तो आपने अपने कॉल बैक में पैरामीटर दे दिया. ठीक है, ये इसको रिजॉल्व कर रहा है. बट ये वाला देन, ये किसे रिजॉल्व कर रहे हैं? कहाँ? कौन? Just remember, we gonna be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gonna be alright. कुछ नहीं है. Basically, dot then जो है, it is first of all used to resolve a promise. It also implicitly under the hood returns a promise. Wow. It also implicitly returns a promise. आपने वो नहीं हैंडल किया तो JavaScript will not throw an error because it is not mandatory that you handle it. It's like कि जैसे मैंने किया कि it was not mandatory that I log it. अगर मैं इसके अंदर console.log करके अगर एक नया promise ही return कर रहा होता, if I was returning a new promise in itself, then this dot then would have been resolving this promise. बट क्योंकि मैंने कोई प्रॉमिस खुद से रिटर्न नहीं किया है, तो अंडर द हुड इस कमेंट को मान लो कि अंडर द हुड हो रहा है. अंडर द हुड व्हाट दिस डॉट देन इज डूइंग इज इट इज रिटर्निंग अ ऑलरेडी रिजॉल्व्ड प्रॉमिस. I do not know how accurate this statement is, but I know this for sure. It returns a promise which is already resolved with an undefined value. So what this dot then is, it is chaining with this promise. Don't forget about this promise or resolve. Just think that it is returning a new promise under the hood. So any dot then that you define after this is resolving the under the hood promise that then itself, this dot then itself implicitly throws. सो अगेन यहाँ पर भी यही होगा. इस डॉट देन ने एक और इम्प्लिसिट नया प्रॉमिस बनाया होगा जो इस डॉट देन ने कर दिया. तो दैट इज हाउ द प्रॉमिस चेनिंग गोज. ठीक है. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू विच लेट्स डू इट. लेट्स डू दिस. डॉट देन So I told you that by design JavaScript ने क्या किया है, whenever there is a then ladder, it is supposed to execute like this. Let us do something. Let us boggle our heads. Ooh. 2 seconds. When will I get logged? प्रॉमिस जब रिजॉल्व हुआ ये वाला, तो ये डॉट देन ने कर दिया. उसके बाद इसने एक इम्प्लिसिट प्रॉमिस भेजा जो ये हैंडल कर रहा है. बट क्या होगा, ये डॉट देन ये कब एग्जीक्यूट होंगे? ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर योरसेल्फ, बिकॉज नन ऑफ माई वीडियोज मेक एनी पॉइंट if you guys don't think for yourself, if you don't close for yourself. See, it's again waiting. It got logged at the last. भाई मैंने तो डॉट देन के अंदर डिफाइन किया था ना, तो इसके बाद ये होना चाहिए. जावास्क्रिप्ट में कोई इमोशन नहीं. इट डज नॉट केयर. टाइम एंड जावास्क्रिप्ट थ्रेड्स वेट फॉर नोबडी. द थिंग इज, ये वाला डॉट देन जो है ना, ये अंडर द हुड वाला प्रॉमिस रिजॉल्व कर रहा है. सेट टाइम आउट डज नॉट रिटर्न अ प्रॉमिस. दिस सेट टाइम आउट डज नॉट रिटर्न अ प्रॉमिस. सो जावास्क्रिप्ट थ्रेड क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं डॉट देन के अंदर आ गया. आई हैव स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन. वो देखेगा अच्छा ये तो एक और असिंक्रोनस ऑपरेशन है. इट विल पुट इट इन द
वेब APIs वो एग्जीक्यूट करेंगे उसको. इट विल मूव ऑन, इट विल नॉट वेट. What if we want the JavaScript thread to wait? We can make it wait. How? Think for yourself. The hint is कि this dot then is dependent on ऊपर वाला dot then. ठीक है. So maybe यहाँ पर जो under the hood जो promise हो रहा है, think along that lines. Not able to think? कोई बात नहीं. हम बैठे हैं भाई, हम क्या करेंगे? Let's do a very simple thing. Let's connect this dot then with a promise. Dot then will only get the control when its promise has finished executing, has resolved. So let's promisify it. Whenever a dot then returns a explicit promise, then this dot then will start pointing towards that promise. So let's return a new promise. It takes a callback. Sorry, it takes a executed function. ठीक है. Set timeout. After 2 seconds. Resolve it. अब क्या हुआ? ये डॉट देन जो है एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है. ठीक है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है. तो ये वाला डॉट देन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अब वो इस वाले प्रॉमिस की तरफ पॉइंट कर रहा है. जब ये चीज नहीं थी तो इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रॉमिस रिटर्न्ड अंडर द हुड व्हिच वाज इमीडिएटली रिजॉल्व्ड. दैट इज व्हाई कंट्रोल यहां पहुंच गया था. नाउ आई एम गेटिंग अ कॉल. एक सेकंड. Sorry for the disturbance. ठीक है. So this dot then is now pointing towards this promise. तो यहाँ पे जो resolve callback है वही callback हम dot then के अंदर देंगे, right? So हम देते हैं wait for me bro. Then this callback will receive a message and we can simply console.log message. Now let's see. Waiting. Again waiting. See? Let's do it. Wait for me bro. Calling the callback के बाद देखना wait for me bro में 2 सेकंड लगते हैं. And after that wait for me के बाद when this get logs done cleaning up exiting. तो wait for me के लिए आप देखना कॉलिंग द कॉल बैक के बाद वेट फॉर मी टाइम लगेगा. पहले टाइम लगा, कॉलिंग द कॉल बैक टाइम लग रहा है, एंड देन वेट फॉर मी ब्रो एंड देन डन लगेगा. सो दिस इज प्रॉमिस चेनिंग, कॉल बैक चेनिंग. जावास्क्रिप्ट हैज मेड इट सो सिंपल फॉर अस कि ठीक है भाई, आपको एक के बाद एक करवाना है कर लो. आपको देन के अंदर भी असिंक्रोनस टास्क देना है और आप चाहते हो कि ये जो चीज़ है वो उसके बाद ही हो, तब भी हो जाएगा. लेकिन द थिंग इज, द ब्यूटीफुल थिंग इज कि इवन दो जैसे कि क्या होगा, ये एक नया प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, राइट? इट इज रिटर्निंग अ न्यू प्रॉमिस. सो हाउ कैन आई शो इट टू यू गाइस? आपने देखा होगा कि इवन दो दिस प्रॉमिस इज डिफाइंड एट द टॉप, चाहे कितना भी नेस्टेड हमारा एसिंक्रोनस लॉजिक क्यों ना हो, द सिंक्रोनस टास्क विल नॉट चेंज. अगर मैं इसके आगे भी कुछ सिंक्रोनस टास्क लगा देता हूँ कि यू नो आई डोंट नो, creating a prefix summary, let's revise some DSA. For example, I have a const air, ठीक है, and then I do some, let's create a prefix sum. I can create a prefix sum using a reduce method. Can I do that? Let's not get into it. For example, for let I equals to 0, I is less than air dot length I plus plus. Then we can do something like const p sum equals to an array where p sum का 0th is the air का 0th, है ना?
and then we can be like, we have to do it outside. Okay, we can be like p sum of I minus 1 plus r of I. When this is done, I'll just log p sum. So as you can see, सब कुछ जो synchronous task है, it will not stop. Only after in the callback queue, this has done, the control will reset. Only after the synchronous tasks have completed executing. Waiting, देखा, all of this got logged. उसके बाद, so you can see however many asynchronous tasks you have nested हैं, कैसी भी है, the JavaScript thread will not wait. It will not wait for anyone. Did I have something in the notes? अलग से promise chaining, I've covered it. Then uncatch blocks. I think we're done. I think this was enough. This video assumed that you guys already knew promises, async await, and stuff like that. It was just some fun that we guys were having. So hope you guys had fun.